Hello, yes, sir. Good evening to everyone. Just confirm me once that my voice is audible. Chat box is here, so you can comment in the chat box that my voice is audible so that we can start our session. Okay. Although the number of participants are very less, but we need to start because we have a limited amount of time and we need to conclude the session. We need to complete the content. So most probably they will join later on or they are going to watch the recording. So yes, we are going to start our discussion on this today's webinar, a very important topic, that is drafting. Sir, my sound is not visible. My sound is not audible. Please comment my sound is not audible or sound is okay. Sound is okay. Yes. Sriji ji, please check at your end. There is certain issue at your end. Most probably my sound is okay. So now, today we are going to discuss on a very important topic, on a very important subject, that is drafting under GST. Okay. As we all know that this is the time of litigation, the current situation, the current time is litigation. Okay. There are a lot of litigations are there related to GST. Okay. कई सारे नोटिसेस हमारे पास में आ रहे हैं, चाहे वो वेदर इट इज रिलेटेड टू जीएसटी ASMT 10, वेदर इट इज रिलेटेड टू बिजनेस ऑडिट, वेदर इट इज रिलेटेड टू ई-वे बिल related matters. So there are number of matters are there. Okay. Or in certain matters, high court has already provided the decision in favor of the taxpayer, but departmental authorities are not ready to accept the same, and for that purpose we need to go for the appeal. Okay. Or sir, first I just want to inform you two to three important things, that this session should be interactive. Okay. If you have any question, if you have any doubt, if you have any point in between the session, you are free to raise the question in the chat box. I will take the question immediately and will solve that doubt. Okay. Second, the mode of communication will be Hindi and English both. Okay. So if you have any issue with English or Hindi, in that case, you need to comment in the chat box. I will convert the same into Hindi or English as per your convenience. Okay. So I will try to use both the languages. Okay. So basically in this session, we are going to discuss about the techniques, how we can draft the appeal. Okay. So मेरा मानना ये है, मेरा पॉइंट ये है कि देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट इन द ड्राफ्टिंग टेक्निक्स. ओके. जस्ट पॉइंट इज दैट यू हैव द सफिशिएंट आइडिया about the provisions of law and how we are going to present the same. That is what is the important thing. Okay. So we'll talk on presentation skills also, and also we'll talk on certain provisions of law from the drafting point of view. Okay. Because एज अ लॉयर, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे प्रोफेशन में ये कहते हैं कि जैसा हम लोग प्रेजेंट करेंगे, the decision will be completely based on our presentation. Okay. The decision of the authority is completely based on our presentation. कई बार क्या होता है, हम लोग अपील फाइल करते हैं या फिर किसी मैटर पे हम लोग एग्री नहीं करते हैं, इन दैट केस वी आर गोइंग टू फाइल द अपील, एंड मेनी केसेस देयर आर सर्टेन इश्यूज दैट डिपार्टमेंट इज गोइंग टू रिजेक्ट दैट अपील ड्यू टू द ग्राउंड्स. अपील में जान भी होती है, सारी की सारे प्रोविजंस के फैक्ट भी हम लोगों ने मेंशन किए होते हैं, बट देयर आर सर्टेन इश्यूज विद आवर प्रेजेंटेशन, एंड ड्यू टू दैट प्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट इज गोइंग टू रिजेक्ट द अपील. ओके. सो दिस इज आल्सो वन रीजन. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सर, जीएसटी के रिटर्न फाइल होते हैं, 17-18 से रिटर्न फाइल होते आ रहे हैं. इन फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 तक जिन्होंने रिटर्न फाइल किए हैं, दिस इज अ area of remuneration. But now there is no such a huge revenue in return filing. Okay. So we need to talk from that point of view as well, because we all are professionals. So if we have the techniques for the appeal, कई सारे GST ऑफिस ऐसे हैं, कई सारे चार्टेड अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स ऐसे हैं, they are handling the written filing work, but they are going to outsource their litigation related matter. Okay. Because the main reason is that there is certain issue from the litigation point of view. Okay. मैं ये नहीं बोलता कि आज इस वेबिनार को अटेंड करने के बाद आपके जितने भी लिटिगेशन के डाउट है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, बट दिस इज माय एश्योरेंस टू यू दैट पोस्ट दिस सेशन all the points related to drafting appeal
in a effective way. We'll discuss on that. Okay, how you can draft a appeal in a effective way, what are the things we need to consider while filing the appeal, how we can file the appeal in online, or what are the grounds which are there we need to consider at the time of filing the appeal. Or we'll also discuss on certain errors, कुछ छोटे छोटे से error है जो कई बार हम लोग कर जाते हैं while drafting the appeal, while filing the appeal. And also we'll discuss on the topic that जब मैं personal hearing के लिए जा रहा हूं, because first we need to file the appeal manually or through online portal, and after that department will give one option for the personal hearing, that is PH. And in that personal hearing we need to present our facts, we need to present the fact of the case. Okay, and based on that personal hearing the decision of the departmental authority will be pronounced. Okay, and based on that we need to take further decision, further, that is we need to take our further options. This will be completely based on the appeal hearing. Okay, so let's start our discussion on the appeal. So first, मुझे अपील कब फाइल करनी है, when I am eligible to file the appeal. Okay, so the first point is that you have the order of adjudicating authority. Sir, who is my adjudicating authority? Suppose department had issued जीएसटी एएसएमटी 10, डिपार्टमेंट ने यहाँ पर जीएसटी एएसएमटी 10 इशू किया रिगार्डिंग स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स. ओके, इस पूरे सेशन को आई विल ट्राई टू गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स, एंड थ्रू दैट एग्जांपल आई एम गोइंग टू क्लियर द सिचुएशन रिलेटेड टू द अपील एंड रिलेटेड टू द मैटर्स. ओके, सो द पॉइंट इज दैट सपोज डिपार्टमेंट हैज इशूड द नोटिस इन फॉर्म जीएसटी एएसएमटी 10. ओके, that is scrutiny of returns. Okay, related to the difference between GSTR 3B and GSTR 2A, and the matter is related to financial year 18-19. Okay, now you had provided your reply within 30 days. Okay, this is the important thing. जब भी हमारे पास में ASMT 10 आता है, this is the first responsibility of the taxpayer or the tax practitioners that we need to file the reply within 30 days. हमको 30 दिन के अंदर अंदर उसका reply file करना है. Okay, if we are not going to file the reply, in that case we are in default, and department can initiate the proceeding under section 73 or 74. Okay, so after that we can also go for the appeal, but the point is that we need to file the reply within 30 days in case of our GST ASMT 10 issued by the departmental authority. Okay, suppose हमने हमारा reply within 30 days यहाँ पर दे दिया, matter was related to difference between GSTR 2A and 3B. On that point we had already submitted our reply. Okay, now department is not going to consider the fact, और department ने यहाँ पर क्या किया, after our reply department has initiated the proceeding under section 73 or 74. Under section 73 means department is going to take your case for not fraud related cases, there is no any separation of fact or material misstatement, and department is going to take the case under section 74. In that case that will be related to our fraud cases or separation of fact or material misstatement. That is what is the situation. Okay, so the point is that department has issued notice under ASMT 10. We had already provided the reply, we had already provided the reply within 30 days. Okay, and after the 30 days department has issued the order, and department has not considered our fact, and department has issued the order under section 73, और department ने बोला कि यहाँ पर इस बंदे के अगेंस्ट के अंदर section 73 के अंदर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए. तो जिस अथॉरिटी ने, वेदर इट इज अ डेप्यूटी कमिश्नर, वेदर इट इज अ जॉइंट कमिश्नर, जितने ऑर्डर इश्यू किया रिगार्डिंग ASMT 10, वी नीड टू, अगर हम उस ऑर्डर के अगेंस्ट में है, इन दैट केस वी नीड टू फाइल द अपील. ओके, सो अपील कब फाइल की जाती है, आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू द बेसिक्स, एंड आफ्टर द बेसिक वी आर गोइंग टू टॉक ऑन द एडवांस लेवल. सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट व्हेन वी नीड टू फाइल द अपील, सो द पॉइंट इज दैट व्हेन the taxpayer is not ready with the decision provided by the adjudicating authority, whether it is related to ASMT 10, whether it is related to departmental audit or business audit, whether it is under section 65 of the CGST Act, और सपोज रास्ते में कोई गुड्स डिटेन कर दिया कोई जीएसटी ऑफिसर्स ने, जीएसटी अथॉरिटी ने, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द ई वे बिल विद द गुड्स. ओके,
In that case, if you are not satisfied with the decision provided by that particular officer, in that case, first we need to pay the amount, okay, and then after we can file the appeal to our jurisdictional officer, that is commissioner ko we can file the appeal. That is what is the approach. Okay, so basically three points are there. In that case, we are going to file the appeal. Okay, there are other examples also available. So the point is that when you are not ready with the decision of the adjudicating authority or GST officer, in that case you can go for the appeal. Okay, the best example is GST A7010 business audit, and in case of e-way bill, अभी recently एक केस हुआ जहां पर कोई टैक्स पेयर ने जो है गुड्स वहां पर रवाना किया राजस्थान से बेंगलोर. ओके, एंड इन बिटवीन दैट ट्रांजिट डिपार्टमेंट ने वहां पर गुड्स को डिटेन कर दिया. लॉजिक इज दैट इन दैट केस देयर वाज टू इनवॉइसेस, वन इज फॉर 42,000, अनदर इज फॉर 38,000, एंड द इनवॉइसेस आर ऑन द सेम डेट टू द सेम पार्टी. डिपार्टमेंट ने यहाँ पर पेनल्टी लगाई बिकॉज सेम डे है, सेम पार्टी है, सेंडर भी सेम है, रिसीवर भी सेम है, सो ई-वे बिल शुड बी एप्लीकेबल ऑन द कंसोलिडेटेड वैल्यू. ओके, बट द टैक्सपेयर हैज नॉट जनरेटेड दैट ई-वे बिल. In that case, department has charged the penalty, and in that case, the taxpayer has filed the appeal on the grounds that in that case, e-invoice is not, e-way bill is not applicable, and although there is no any revenue loss to the government, and यहाँ पर अपील के अंदर जो है विनिंग डिसीजन दिया गया बिकॉज द सेम डिसीजन इज प्रोनाउंस्ड बाय द हाई कोर्ट. सो द कंप्लीट फैक्ट इज दैट द प्रेजेंटेशन. ओके, यहाँ पर उस केस को उस तरीके से प्रेजेंट किया गया, वरना यहाँ पर पॉइंट ये भी हो सकता था कि दो इनवॉइसेस है तो कहीं वो बंदा माल बेच करके उस इनवॉइस को हटा देता, तो यहाँ पर एक रेवेन्यू लॉस भी हो सकता था गवर्नमेंट को. बट प्रेजेंटेशन इस तरीके का था कि वहां पर अथॉरिटी को उसको एक्सेप्ट करना पड़ा. सो द कंप्लीट appeal filing and the complete decision process is completely based on the drafting and the presentation skills. Okay, so the point is that when we need to file the appeal, so when we are not ready with the decision of the GST officer, in that case we can file the appeal. Now your question is that, sir, we need to file online or we need to file offline? Because now time there is a big issue is there. Okay, when you are going to file the appeal on GST common portal, okay, we'll discuss on that practical aspect as well. So जब हम लोग अपील फाइल करने के लिए जाते हैं GST कॉमन पोर्टल पे, और अगर मैं वहां पर ऑर्डर नंबर या फिर ऑर्डर आईडी इंसर्ट करता हूं, बिकॉज जिस भी अथॉरिटी ने मुझे ऑर्डर इश्यू किया है, authority is going to provide me the order ID or order number, and when I am going to put that order ID or order number on GST and common portal, and in that case if you found that this order number or order ID is showing invalid on GST and common portal, and if the order number and order ID is invalid, in that case you will not be able to file the appeal online. So can I file the appeal manually? Yes. So there are two options to file the appeal. First one is online, another option is manual. If you are not able to file the appeal, in that case you can file the appeal system, that is manually. Okay, and if you want to file the appeal related to service tax matter or VAT matter, in that case you need to file appeal manually. Okay, so basically मुझे अपील कब फाइल करनी है? When I am not ready with the decision provided by the GST officers. Second, I can file the appeal online or manually. So both the options are available with me. If I am not able to file the appeal on GST and common portal through the order ID or order number, in that case I can file the appeal. I need to submit my grounds to the department manually. So I can file the appeal online or I can file the appeal manually. Now, your question is that, sir, we need to submit certain documents with the appeal. कई बार हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी गलती करते हैं कि जब हम लोग अपील फाइल करते हैं, इन दैट केस वी आर जस्ट गोइंग टू, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप लोगों ने ऑनलाइन या फिर मैनुअली अपील फाइल की है? दिस इज माय क्वेश्चन फ्रॉम यू. You had filed any appeal to the GST department recently? Anyone is there? अगर नहीं भी फाइल किए तो कोई इश्यू नहीं, आप कमेंट कर सकते हो, बिकॉज आफ्टर दिस सेशन यू विल बी इन अ सिचुएशन टू फाइल द अपील बिफोर द अपीलेंट अथॉरिटी. Just to make this session interactive, please comment in the chat box. So the point is that
जब हम लोग अपील फाइल करते हैं, वी नीड टू फाइल द grounds of appeal with that appeal. Okay, and also we need to submit the prayer. There is certain specific format is there, we need to file the appeal in that format only. Okay, अगर हम लोग किसी एनी अदर फॉर्मेट के अंदर जाकर के अपील फाइल करते हैं, इन दैट केस डिपार्टमेंट इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर अपील. So there is a specific format is there, we'll discuss on that format as well. Okay, also the format is available on the GSTN common portal, but we'll discuss on that as well. Okay, for your practical implications. Now, is there any requirement to attach any document with your appeal? कई लोग अपील के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करते हैं. दे आर नॉट गोइंग टू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट विद द अपील. दे आर जस्ट गोइंग टू पुट द रिलेटेड फैक्ट्स विद द ग्राउंड्स ऑफ अपील, और वो ये बोलते हैं कि हमने फैक्ट ग्राउंड्स के अंदर डाल दिए हैं, सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट विद द अपील. बट माय पॉइंट इज दैट you need to file the relevant document with the appeal. Suppose there is a matter related to the difference between GSTR 3B and GSTR 2A, and if you have the physical invoices available with you, in that case, when you will file the appeal to the departmental authority, whether it is online or whether it is manually, you need to file those supporting invoices with that appeal. आपको जो है वो supporting invoices वहां पर attach करनी है. Okay, so this is just one example. We'll discuss you each and every situation. In that case, you can go for the appeal. Okay, although time is limited, but we'll discuss on that as well. We'll discuss on each and every parameter of GST. In that case, you can go for the appeal. So whenever you want to file the appeal or you are going to file the appeal, you need to attach the relevant documents with that appeal जो कि आपके उन grounds को convey करते हो, whether it is related to 2A 2B, whether it is related to 3B, whether it is related to implication of e-way bill, whether it is related to your input tax credit, whether it is related to your place of supply, you need to submit the relevant documents. Now आपका क्वेश्चन ये होगा, सर हम लोग ये डिस्कस तो करेंगे कि अपील को कैसे फॉर्मेट करना है, कैसे ड्राफ्ट करना है, बट किस किस सिचुएशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, वी वांट टू नो दैट फैक्ट एज वेल. So we'll take the situation and based on that situation we'll discuss on the documentation part as well. Now first we'll discuss on the situation and then after we'll go to hearing and additional documents. Now मैंने कुछ पॉइंट यहां पर हाईलाइट किए हैं जिन पॉइंट से रिलेटेड आप अपील फाइल कर सकते हो. ओके, और मैक्सिमम इन 99% केसेस यू नीड टू फाइल द अपील इन दीज स्पेसिफिक केसेस ओनली. इसके अलावा कोई केस होगा ही नहीं जिसमें आपको अपील फाइल करनी है. मैंने सारे के सारे पॉइंट यहां पर कवर कर लिए हैं, और जब मैं ये पॉइंट कवर करूंगा एट दैट टाइम आई विल ऑल्सो गोइंग टू शेयर विथ यू द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू अटैच. ओके, एंड विल ऑल्सो डिस्कस द ग्राउंड्स एज वेल. ओके, although situation related specific grounds we cannot discuss in that particular webinar because we have no situation, but we'll take the journal assumption, journal grounds in that session. Okay, so now suppose हो सकता है there is issue related to supply. Now sir, how you can say that this issue is there in case of appeal and how we can file the appeal in that specific situation. Suppose डिपार्टमेंट ने आपका केस जो है डिपार्टमेंटल ऑडिट के अंदर ले लिया अंडर सेक्शन 65. ओके, और जब डिपार्टमेंट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर रहा था, व्हेन डिपार्टमेंट वाज एनालाइजिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एट दैट टाइम डिपार्टमेंट फाउंड सर्टेन टर्म्स, सपोज 2 to 3 टर्म्स वाज देयर, और उन टर्म्स के अंदर डिपार्टमेंट को ऐसा मिला कि यहां पर जीएसटी लगना चाहिए. ओके, बट यू हैड नॉट पेड द जीएसटी इन दैट पर्टिकुलर केस और इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, और डिपार्टमेंट ने बोला दिस इज टू बी कंसिडर्ड एज सप्लाई एंड जीएसटी शुड बी चार्ज्ड ऑन दैट. ओके, सपोज there is interest income is there in your profit and loss account. This is just an example, and with that example I am going to clear the situation. और डिपार्टमेंट ने बोला this interest is related to your commercial interest. Okay, this is related to completely related to your debtors part. So in that case you need to pay the GST. This interest is considered or covered under the definition of supply. और डिपार्टमेंट ने बोला suppose the quantum is 1 crore rupees, और डिपार्टमेंट ने बोला यू नीड टू पे द जीएसटी ऑन दैट 1 crore rupees एट द रेट ऑफ 18%. द अमाउंट इज 18 lakh rupees एंड योर 1 crore इज टू बी कंसीडर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई. और आप ही आर्ग्यूमेंट कर रहे हो कि सर दिस इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू माय फाइनेंशियल इंटरेस्ट.
ये डेटर्स नहीं है, ये मेरी सराफी की पार्टी हो सकता है, मेरी एक कोई पार्टी जिसके साथ ट्रेड के ट्रांजेक्शन भी हो और जिसके साथ अनसिक्योर्ड लोन के ट्रांजेक्शन भी हो, और इफ दिस इंटरेस्ट इज ओनली ड्यू टू दैट अनसिक्योर्ड लोन but department is not going to agree with that particular factor, in that case, that is what is the situation. In that case you need to go for the appeal with the documents. और अब क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होगा? सो फॉर दैट पर्पस यू नीड टू सबमिट योर 3CD रिपोर्ट, and in that 3CD report you had shown the entry under unsecured loan, and you need to submit the all correspondence documents related to the cross or counterparty documents related to interest in the appeal. Although you can submit these documents in front of the adjudicating authority, but if departmental authority is not satisfied with your submitted documents, in that case you have the way you can file the appeal to the appellate authority in case of issues related to the supply. Okay, so this first example is okay for everyone, that how they are going to cover a particular thing under the definition of supply. अब मैं जैसे जैसे आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, जैसे जैसे कुछ सिचुएशन हम लोग डिस्कस करेंगे, आई विल आस्क दैट दिस कॉन्सेप्ट इज ओके और दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट ओके. If you found any issue, you just need to comment in the chat box, and if that concept is okay, in that case also this is your responsibility. You need to provide the reply in the chat box. Okay, and if possible, then please prepare the notes. I know you are our professionals, but जब हम लोग learn कर रहे हैं, at that time we need to learn as a as a student. So in that case, just prepare the notes as well. So this first example is okay for everyone related to my interest. जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे मैं नेक्स्ट पॉइंट नहीं लूंगा. नाउ there is certain legal fees is there. There is certain legal fees is there in your profit and loss account, and department is there, this is to be considered under your reverse charge mechanism as per section number 9 subsection 3. But you are saying that this legal fees is just for the consultancy related to the GST, not related to the advocacy. Okay, this is the legal fees related to the GST consultancy, or this should be considered as a professional fees. But department is saying you had used the word had as a legal fees, you need to pay the reverse charge mechanism. Although you had submitted all the relevant documents, but department is not ready with your fact, in that case you need to file the appeal. And जब आप appeal में जाओगे, at that time you need to submit the additional documents related to the counterparty invoices related to the legal fees, that is which is related to your professional fees related to the GST consultancy. Okay, you also need to submit the undertaking taken from that advocate, that that person has already only provided the consultancy to your firm, and he has not provided any type of legal or advocacy services. So the same is not to be considered under the legal services, or the reverse charge mechanism is not to be applicable. Okay, so these are the point how we are going to cover in the appeal. मैं ये पॉइंट आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज अगर मुझे फॉर्मेट बताना है, इन दैट केस उस फॉर्मेट पे डिस्कशन करना जस्ट 10 to 15 minutes वर्क. ओके, बिकॉज फर्स्ट पैरा इज फिक्स, सेकंड पैरा इज फिक्स, ग्राउंड से तो चेंज है, थर्ड पैरा इज फिक्स, तो सब कुछ तो उसके अंदर फॉर्मेट फिक्स है. नाउ पॉइंट इज दैट ग्राउंड्स. सो ग्राउंड्स आप लोग कैसे उसके ड्राफ्ट कर सको, उसके लिए देयर इज रिक्वायरमेंट दैट आई नीड टू डिस्कस समथिंग related to the analytics. Okay, how you are going to analyze the situation. So मैंने just यहाँ पर दो example लिए हैं. There are multiple example, multiple permutation, multiple combinations are there, and with that example you can understand the situation related to the supply. Okay, now next, which is very much important related to time of supply as per section number 12 or 13 or 14 of the CGST Act, the matters related to the time of supply. Suppose आपने कोई सप्लाई पे टैक्स पे किया है मार्च 2022 में,
बट एज पर डिपार्टमेंट आपको उसके ऊपर टैक्स पे कर देना था फरवरी 2022 में. यू हैड टू पे द टैक्सेस इन द फेब 2022. Okay, as per the provisions of time of supply. Now department is saying at the time of business audit, at the time of scrutiny of returns, at the time of any litigation, department is saying that you need to pay the interest on that one month जिसके ऊपर आपने डिले पेमेंट किया या फिर डिले आपने उसकी सप्लाई कंसीडर की. Now, as per the provisions of section number 12, section number 13, section number 14, your situation is falling under that situation in which you had paid the taxes on the correct time. That means आपका payable मार्च में ही बन रहा है. But department argue कर रहा है because I just need to take the reference of section so that I can easily explain the situation. Section number 12 will be applicable in case of supply of goods. Okay. सप्लाई ऑफ गुड्स के केस के अंदर जो मेरी इनवॉइस की डेट होगी दैट विल बी ट्रीटेड एज माय टाइम ऑफ सप्लाई. ओके, नाउ द सिचुएशन इज दैट यहां पर ऐसा हुआ है देयर इज सर्टेन अमेंडमेंट इन दैट इनवॉइस. पहले जो इनवॉइस बनी थी दैट वाज फॉर 1 लाख रुपीस. नाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द इनवॉइसेस फॉर 5 लाख रुपीस विथ द प्रीवियस डेट. ओके, in that case 4 lakh rupees suppose हो सकता है आप 2 महीने बाद अमेंड कर रहे हो. in that case there is liability of the interest on that particular invoice. Okay, if there is matter related to that particular thing, that is what is covered under the definition of time of supply. और अगर इससे रिलेटेड यहां पर कोई मैटर है और अगर आपके पास में प्रॉपर ग्राउंड्स है कि हमने ये जो इनवॉइस इशू की है दैट इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पीरियड एंड वी आर गोइंग टू सबमिट द सेम, इन दैट केस वी मे कंसीडर द फैक्ट एंड वी मे फाइल द अपील ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राउंड. ओके, सो दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर टाइम ऑफ सप्लाई. नाउ सपोज in case of services you need to pay the GST on advances. Okay, now I am just going to share the examples. Okay, अब उस एडवांसेस वाली सिचुएशन के अंदर ऐसा है कि आपको जब भी एडवांस रिसीव हुआ ऑन अकाउंट ऑफ सर्विसेज यू नीड टू पे द GST. बट यहां पर कुछ वापस एडवांस का रिवर्सल है and in that case you had just paid the GST on the net amount, that is advances less reversal. but department ने उस पीरियड के अंदर that is suppose financial year 21-22 के अंदर just advance received है and 5th of April को यहाँ पर advance का reversal भी है but you had paid the GST on the net basis. but department is saying that on 1st April 2022 to 223 for that particular financial year there is just a term that is advances and you had not paid GST on that advances, you had paid the GST on the net basis. That is what is the situation. Suppose this is the period that is financial year 21-22. Okay, there is an advances booked on 25th March. Just carefully check that example. 25 मार्च को यहां पर एक एडवांसेस बुक हुआ with 5 लाख रुपीस. ओके, नाउ 4th of April को 4th of April 2022 there is a reversal of 3 lakh rupees. Okay, and you need to file the return on 20th of April. तो आपने देखा कि मेरा 3 लाख रुपए तो वापस रिवर्स हो गया है, so I just need to pay GST on that 2 lakh rupees. Okay, so you are going to pay GST on that 2 lakh rupees only. but डिपार्टमेंट ने यहाँ पर क्या किया, डिपार्टमेंट ने बोला कि for that financial year, that is financial year 21-22 you need to pay the GST on complete 5 lakh rupees और फिर आप उसको रिवर्स कर देना नेक्स्ट मंथ में. बट आपके पास में ये ग्राउंड है, आप यहाँ पर ये ग्राउंड पे डिस्कशन कर सकते हो, अपील फाइल कर सकते हो कि सर मेरा यहाँ पर नेट बेसिस के ऊपर उस मंथ में ये वाली सिचुएशन आ गई थी, सो आई हैड पेड द सेम, सो आई एम जस्ट लाइबल फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट. ओके, मैं जो भी एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ दीज आर द कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल एंड दिस इज द रियल सिचुएशन जो रियल में हुए हैं, रियल केस स्टडीज है. द सेम सिचुएशन इज देयर, जस्ट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द क्वांटम. हो सकता है ये 5 लाख का 5 करोड़ था, 3 लाख का 3 करोड़ था. Okay, so that taxpayer has only paid GST on that net 2 crore rupees and department has issued the demand for GST on complete 5 lakh rupees के next month में जाकर के आप रिवर्सल कर देना. बट
उसने बोला मैं नेट बेसिस पे किया है, नाउ आई एम रेडी टू पे द इंटरेस्ट ऑन दैट 3 करोड़ रुपीज जो मुझे 1 मंथ का बनता है, आई एम रेडी टू पे, बट आई एम नॉट गोइंग टू मेक द पेमेंट ऑन द ग्रॉस बेसिस, दैट इज 5 लाख रुपीज. That is what is the situation. On that basis we may file the appeal, but in that case we need to provide the same in our grounds कि भैया 4 तारीख को ये सिचुएशन हुई, our written filing date is 20th and we had already know the complete facts on the date of our written filing, hence we had considered just that net amount, and all those situations we need to submit with the grounds of appeal. So this example is clear in your mind, because this is a very much specific example and this is a case study of AAR authority decision. So just confirm me one that this example is okay for you. Or we need to take one more example. So in case of time of supply, we need to be very much careful for that. As per section, I am also going to take that situation as well. As per section 14 of CGST Act, if there is change in rate of tax, in that case also we need to make multiple permutation and combinations, and we need to make the payment of taxes as per the correct rate, as per the applicable rate, as per section number 14 of CGST Act. So in that situation also, if there is any demand, if there is any notice issued by the departmental authority and we are not satisfied with that, in that case we may file the appeal, but before filing the appeal we need to know the complete grounds of section number 14 so that we can put all the grounds in that specific para. Okay, now this is the most important point, and maximum number of litigations are due to this specific point, that is related to value of supply. Okay, because we are going to make the payment on a particular value. सपोज उस वैल्यू के अंदर अगर मुझे कुछ एडिशन करना है, एज वी ऑल नो दैट सेक्शन नंबर 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इज डीलिंग विद द वैल्यूएशन. ओके, section number 15 subsection 1 is saying that your transaction value will be the value of supply if the buyer and seller is the not the related party and price is the sole consideration. Okay, that is what is the point. So now हो सकता है मुझे मेरे वैल्यू का जो पार्ट है, जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है, प्लस यहां पर मुझे कुछ फ्राइट है, वो भी मुझे वैल्यू का पार्ट बनाना है. यहां पर कुछ कमीशन है, वो भी मुझे वैल्यू का पार्ट बनाना है. यहां पर कुछ ट्रेडिंग एक्सपेंस है, वो भी मुझे वैल्यू का पार्ट बनाना है. ओके, सो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट इज गोइंग टू चेक योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, डिपार्टमेंट इज गोइंग टू चेक योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जब डिपार्टमेंट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहा है, एट दैट टाइम जब वो आपका सेल्स रजिस्टर चेक कर रहा है, उसको कुछ ऐसी टर्म्स पता चली जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होना चाहिए. सपोज देयर इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन द फ्राइट. ओके, and you need to add that freight in the particular value of supply, but the taxpayer has not added the same in the value of supply. So department has issued the question on that on that particular freight taxpayer has to pay the GST, but taxpayer has not paid the same, so we are going to raise the demand on that particular part. Okay, now when you are going to file your reply or when you are going to file your appeal, in that case you need to consider the fact of section number 15(1) and 15(2), and on the basis of that you need to provide your grounds in the appeal. और वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कई बार हम लोग अपील फाइल करते हैं और कई सारे लोग अपील फाइल करते हैं. इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन दे आर जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड द प्रोविजन ऑफ लॉ, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द सेक्शन. ओके, वो लोग प्रोविजन ऑफ लॉ दिखा देंगे कि वहां पे एज पर द वैल्यू ऑफ सप्लाई दिस इज टू बी द प्रोविजन एंड दिस इज टू बी द सिचुएशन, बट दे आर नॉट गोइंग टू शो द सेक्शन. So whenever you are going to file the appeal on account of your valuation part, you need to take the reference of section number 15. मैं ये पॉइंट इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज जब आप सप्लाई से रिलेटेड कोई अपील फाइल करोगे, इन दैट केस यू नीड टू टेक द रेफरेंस ऑफ सेक्शन नंबर 7 ऑफ सीजीएसटी. व्हेन यू आर गोइंग टू फाइल द अपील,
related to the time of supply matter. In that case, you need to take reference of section number 12, section number 13, section number 14 of time of supply provisions. बिकॉज कई बार क्या होता है, हम लोग अपील फाइल कर देते हैं. मैं यहां पर आऊं, केवल आपको एक फॉर्मेट समझा दूं. इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट यू नीड टू फाइल द अपील. In that situation, what will happen when you will design your appeal or when you will file your appeal? In that case, आपको यही पता है कि मुझे इस फॉर्मेट में अपील डिजाइन करनी है, बट उस फॉर्मेट में कौन कौन सी चीजें मुझे इंसर्ट करनी है, कौन कौन से प्रोविजन ऑफ लॉ मुझे यहाँ पर इंसर्ट करने हैं, कौन कौन से सेक्शन मुझे यहाँ पर इंसर्ट करने हैं. दैट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, when we'll discuss on that format, we'll discuss with you that we need to file certain decisions, whether it is a double AR authority, triple AR authority decision, or a high court judgment, supreme court judgment. We need to include the same in our appeal, because this will create a huge impact on the appellate authority. So that is what is the importance. So in this particular segment, if department has raised any question on your valuation part, okay, related to valuation, suppose there is a question on account of fair market value, there is a question on account of rule number 27, 28, 29, 30, 31, okay, और अगर आपने कोस्ट प्लस 1110 पे वैल्यू किया है और डिपार्टमेंट बोलता है कि दिस स्पेसिफिक सिचुएशन इज टू बी कंसीडर्ड अंडर रूल नंबर 27, बट यू हैड कवर्ड द सेम अंडर रूल नंबर 30, in that case you need to provide your grounds in the appeal based on the rule number 30. Although आज के इस वेबिनार के अंदर हमको प्रोविजन ऑफ लॉ कवर नहीं करने थे, बट द पॉइंट इज दैट without provision of law, I am not in situation to explain you that how you are going to draft the grounds of the appeal. So that is what is the important thing. When you are filing an appeal on the grounds related to the valuation, you need to submit the reply. You need to provide your grounds on the basis of rule number 27, 28, 29, 30, 31, 32A, or this is related to the second hand goods or related to the insurance company. You need to include that particular fact in the grounds of appeal. Next, suppose there is a situation, in that case there is a litigation on account of your place of supply. सर CGST और SGST चार्ज होना था, आपने IGST चार्ज कर दिया. Now at the time of business audit, department is saying that you need to pay that CGST और SGST, और IGST जो आपने चार्ज किया है वो आपको वापस रिवर्स नहीं होगा, because the time of section 16 subsection 4 has already been left. That is what is the specific situation. Okay, suppose related to 1920 matter, मुझे सी और एस जीएसटी पे करना था, बट मैंने गलती से आईजीएसटी का यहां पर पेमेंट कर दिया. एट द टाइम ऑफ डिपार्टमेंटल ऑडिट, जब मेरी डिपार्टमेंटल ऑडिट आई तब मुझे पता चला कि आई नीड टू पे द सी और एस जीएसटी, बट आई हैड पेड द आईजीएसटी. और आज भी मैं इसी ग्राउंड्स पे फाइट कर रहा हूं कि मेरी तो उस समय लाइबिलिटी आईजीएसटी की ही थी. और जब मैं इस प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड डिस्कशन करूंगा, एट दैट टाइम आई नीड टू कंसीडर द फैक्ट ऑफ सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 12 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट रिलेटेड टू द प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट दिस स्पेसिफिक सिचुएशन इज टू बी कंसीडर्ड एज अ इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई. कई बार क्या होता है, हम केवल ये फैक्ट अपील के अंदर मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगना चाहिए. अरे वो लगना क्यों चाहिए? What is the basics of that? What is the important section which is here? On that ground you are saying that this particular place of supply is to be applicable in this specific situation. So from that perspective, you need to be very much clear in your mind that you need to argue with reference to the place of supply provisions. Okay, so जब भी आप अपील फाइल करो, because we already know the facts कि मैं अपील किस ग्राउंड पे या किस मैटर पे फाइल कर रहा हूं. ओके, हो सकता है वैल्यू से रिलेटेड है, प्लेस से रिलेटेड है, सारे मैटर एक साथ में होंगे नहीं. फर्स्ट यू नीड टू टेक द बुक and completely study that particular provision. If you are going to file the appeal on the ground of place of supply, in that case we need to know the complete fact of section number 10, 11, 12 of IGST Act related to the place of supply. Each and every specific point of that place of supply we need to include in that particular para, so that our appeal will be effective. Okay, there is nothing important in the format. The must thing is that we need to know the crux of the particular thing. So अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया रिलेटेड टू अपील, जो कि मेरे ग्राउंड्स में काम आने वाला मटेरियल है, वो आपके दिमाग में समझ आ रहा है क्या? आर यू इन सिचुएशन टू अंडरस्टैंड द फैक्ट? जस्ट कंफर्म मी वंस सो दैट वी कैन टेक नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट ग्राउंड or one important subject on that. There is a lot of litigations are there.
आई एम एक्सपेक्टिंग रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन, बिकॉज अगर आपने कभी फाइल नहीं किया है अपील, और इफ यू वांट टू फाइल द अपील, इन दैट केस जो मैं आज ये सिचुएशन आपको दे रहा हूं, इस सिचुएशन पे कौन कौन से पॉइंट होते हैं, यू नीड टू रेडी इन योर एक्सेल सीट, ओके, एंड ट्राई टू राइट कंटेंट ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. सो आपको अगर उसमें कोई भी डाउट आ रहा है, अभी यू आर फ्री टू कनेक्ट विथ मी ओवर व्हाट्सएप और ओवर कॉल, सो दैट वी कैन डिस्कस ऑन दैट, ओके, so that at the time of your practical situation you can easily connect. मैं यहाँ पर कोई मिरेकल नहीं हो रहा है कि आपको 1-2 घंटे के अंदर पूरी जो है ड्राफ्टिंग सिखा दूंगा, बट द पॉइंट इज दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू द टेक्निक्स दैट हाउ यू कैन ड्राफ्ट द अपील इन अ इफेक्टिव वे. नाउ this is the most important topic, that is my input tax credit related issues. मैं हमेशा बोलता हूं this is the time of ITC. Maximum, that is 99% of the litigations are only due to that input tax credit, and in maximum situations department is not ready with your contention, and in that situation you need to file the appeal. हो सकता है प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड बहुत रेयर सिचुएशन में इश्यू आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड भी, सप्लाई से रिलेटेड इश्यूज फिर भी आते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिलेटेड इश्यूज फिर भी आते हैं, बट द मोस्ट हॉट टॉपिक from the litigation point of view under GST is your input tax credit, and you need to be ready from that perspective. Department may ask the question on the basis of difference between 2B and 3B, 2A and 3B. There is difference on account of blocked credit under section 17 subsection 5. हो सकता है कोई आप बोल रहे हो as per you this the particular specific input tax credit is covered under the definition of plant and machinery, but department is not considered the same. In that case you need to file your appeal, you need to present the definition of plant and machinery, that why this particular thing is to be transferred under the plant of machinery. In that particular situation you are arguing for that this expenditure is in nature of the my revenue expenditure, and department is saying that this expenditure is capital nature. In that case, when you are going to draft the grounds, in that case you need to put that particular fact that why this particular expenditure is considered as the revenue expenditure, and you need to attach the supportings. अब सपोर्टिंग आप एडजस्ट कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, ओके. सो सपोज हो सकता है यहाँ पर पॉइंट इज रिलेटेड टू द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, कोई डिस्ट्रीब्यूटर ने कोई इनपुट डिस्ट्रीब्यूट की, एंड आफ्टर दैट वहां पर कोई डेबिट और क्रेडिट नोट इश्यू हो गया, एंड द मैटर इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. इन दैट केस यू नीड टू प्रोवाइड द सफिशिएंट डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द ISD. Okay, there is situation related to the reversal calculation as per rule number 42 43. आपने मंथली वहां पर कैलकुलेशन की फॉर द रूल नंबर 42 43, एंड एज पर रूल नंबर 42 43 आपने मंथली वहां पर रिवर्सल कर दिया, बट डिपार्टमेंट इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सिचुएशन योर मंथली कैलकुलेशन. डिपार्टमेंट इज नॉट रेडी because department is doing the annual calculation, and while doing the annual calculation department has come with a certain another amounts. सो डिपार्टमेंट यहाँ पर बोल रहा है कि आपको रिवर्सल इस अमाउंट का करना चाहिए था. सो इन दैट केस अगर आपके पास में आपके डॉक्यूमेंट रेडी है रिलेटेड टू योर एग्जेम्प्टेड टर्नओवर, रिलेटेड टू सपोज देयर इज अ मैटर रिलेटेड टू रूल नंबर 42, इन दैट केस यू नीड टू प्रोवाइड द एग्जेम्प्टेड टर्नओवर, द टोटल टर्नओवर, द ITC रिलेटेड टू द exempted product specifically, the ITC related to the taxable product specifically, non-business purpose specifically, all these things with quantum you need to provide the same in your appeal with the relevant calculations, okay. If there is a situation related to rule number 43, or there is relation in specific situation, in that case you need to reverse the ITC on account of non payment to the supplier. 180 दिन में पेमेंट नहीं किया और आपको ITC रिवर्सल करना है, और अगर आप बोल रहे हो there is a mutual agreement is there, and on the basis of that we are not going to make the payment, or all other points are there, so you need to present the same in your grounds of appeal ke why you are not going to make the payment of that particular to the supplier. In case of export, अगर आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड क्लेम किया है, इन दैट केस डिपार्टमेंट ने अगर उसके अगेंस्ट में कोई क्वेश्चन रेज किया है रिलेटेड टू नॉन पेमेंट और नॉन रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट फ्रॉम द other country, in that case also you need to provide the sufficient documents, and on the basis of that you need to file the appeal. So all these situations are there, in that case you need to file the appeal. Now
पेनल्टी रिलेटेड इश्यूज, बिकॉज आज हम सभी लोग टैक्सपेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। डिपार्टमेंट हमेशा ये सोचेगा कि योर केस इज टू बी कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 74, ओके, दैट इज रिलेटेड टू द फ्रॉड, दैट इज रिलेटेड टू मटेरियल मिस स्टेटमेंट, दैट इज रिलेटेड टू सप्रेशन ऑफ फैक्ट, एंड हम हमेशा ये ट्राई करेंगे अवर केस इज टू बी कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 73, ओके, दैट इज रिलेटेड टू नॉन फ्रॉड केसेस, सप्रेशन ऑफ फैक्ट वहां पर नहीं है और मटेरियल मिस स्टेटमेंट भी नहीं है। सो इन दैट केस सपोज डिपार्टमेंट has issued order in your specific case that your case is to be covered under section number 73 and this is the quantum of penalty, but you want that your case is to be covered under section number 73. In that case, when you are going to file the appeal, you need to put the all grounds related to section number 73 in your appeal. Okay, grounds of appeal, you need to present the complete section in that particular part. We'll also discuss on that कि कौन कौन सी चीजें सेक्शन से रिलेटेड आपको डायरेक्टली कट कॉपी पेस्ट करनी है अपील में, वो भी आज के इस वेबिनार में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट द पॉइंट इज दैट फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग ग्राउंड्स यहां पर तैयार करोगे। डिपार्टमेंटल ऑडिट रिलेटेड इश्यूज, दैट मींस जो भी हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किए, मोटा मोटी यही सारे के सारे पॉइंट डिपार्टमेंट इज गोइंग टू रेज इन देयर डिपार्टमेंटल ऑडिट or while doing the business audit or while doing the departmental audit. So we need to be very much carefully at that particular time, we need to be very much careful at that particular time in that particular situation that all those things जो भी हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड रिलेवेंट सेक्शन, अगर मैं बात करूं, यू नीड टू पुट द सेक्शन, you need to put the decision, you need to put the analysis of the section, you need to put the ground, and you need to put the quantum. These things are your grounds of appeal. और ये ग्राउंड्स ऑफ अपील कहां से आने वाले हैं? फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ। और कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। वी हैड ऑलरेडी कवर्ड द पॉइंट्स from which we are going to extract the grounds of appeal. Now we are going to discuss on the our format part and all that, but the must thing is that we need to know the पर्टिकुलर प्रोविजंस के कहां से मैं जो है मेरे ग्राउंड्स निकालने वाला हूं, बिकॉज हर सिचुएशन में बाकी सारी की सारी चीजें सेम होगी बट आपके दो ग्राउंड्स हैं वो यूनिक होंगे। एंड इफ यू आर गोइंग टू कट कॉपी एंड पेस्ट योर ग्राउंड्स ऑफ अपील, इन दैट केस योर अपील विल बी रिजेक्टेड, डिपार्टमेंटल अथॉरिटी इज नॉट गोइंग टू एग्री विथ योर अपील। सो इन दैट सिचुएशन वी नीड टू बी वेरी मच केयरफुल कि जो हमारे ग्राउंड्स ऑफ अपील है वो बहुत कंसाइज होने चाहिए, बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए। एक मार्केट में एक बात चलती है कि जितना बड़ा मेरी अपील की फाइल होगी उतने ज्यादा उसके चांसेस होंगे कि अपील मेरी एक्सेप्ट हो जाए या फिर डिपार्टमेंटल अथॉरिटी एग्री हो जाए। नो, आपकी अपील जो ग्राउंड्स ऑफ अपील है वो कंसाइज होने चाहिए, अपने आप में एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए, एनालिटिकल होने चाहिए, बेस्ड ऑन द फैक्ट होने चाहिए। और वो सारी चीजें कब होगी? व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर ग्राउंड्स ऑफ अपील बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ लॉ, बेस्ड ऑन द पॉइंट, बेस्ड ऑन द टॉपिक। अगर आप कहीं से कट कॉपी पेस्ट कर लोगे, इन दैट केस योर ग्राउंड्स ऑफ अपील विल नॉट बी यूनिक, योर ग्राउंड्स ऑफ अपील विल नॉट बी बेस्ड ऑन द फैक्ट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी चीजें आप कट कॉपी पेस्ट कर लेना, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं कई सारी डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज के साथ डिस्कस करता हूं, उनके साथ एनालिसिस करता हूं। एट दैट टाइम हमारा ये डिस्कशन होता है कि दे आर सेइंग दैट मोस्ट ऑफ द अपील्स आर कट कॉपी एंड पेस्ट, they are just going to copy the content and put the same in the appeal. So that is what is the situation. We are not going to do that particular type of practices. We need to prepare the appeal in a specific way with the unique language. There are certain specific consideration we'll discuss later on. So most probably आपको इसका आइडिया होगा। अपील की जो हायरार्की है हम उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। If there is any decision provided by the adjudicating authority and taxpayer is not ready with that decision, in that case we can file the appeal to the appellant authority. Okay, and if we are not ready with the decision of the appellant authority, in that case we can go to the appellant tribunal. अभी अभी यहाँ पर appellant tribunal भी specified हुए हैं and appellant tribunal भी setup हो रहे हैं। Till date, appellant tribunals are not there. If we are not satisfied with the decision of appellant authority, in that case we need to wait for the setup of the appellant tribunal. Okay, so
अभी यहाँ पर अपीलेंट ट्रिब्यूनल नहीं है, सो वी नीड टू वेट फॉर द अपीलेंट ट्रिब्यूनल, बट नाउ गवर्नमेंट हैज कम अप विद द प्रोविजन ऑफ अपीलेंट ट्रिब्यूनल. उनका सेटअप स्टार्ट हो गया है, बहुत जल्द दे आर कम इनटू वर्किंग. सो इन दैट केस वी कैन गो फॉर अपीलेंट ट्रिब्यूनल एज वेल. If someone is not ready with the decision of appellant tribunal, in that case we can file the appeal through the high court, and if we are not ready with the decision of high court, in that case we can file the appeal to the Supreme Court. This is the part and parcel of the theory. Okay. Now the point is that how we can file the appeal on the online. We'll discuss first on that, and after that we'll discuss on the format. Most probably we had, just wait for a single second. Most probably the screen is visible related to the portal screenshot. This is the dashboard of the GSTN common portal. When you will log into the GSTN common portal, you first need to go to the services tab. Okay, you first need to go to the services tab. This is the process to file your appeal online. Okay, if you are going to file the appeal manually, we'll discuss on that as well, but first we are going to discuss on the point that how you can file appeal online from GSTN common portal. You just need to click on the services tab. Under that services tab, you need to click on the my applications. Okay, you need to click on the my applications, and after clicking on the my application, you need to select the application type, and in that case you need to select the appeal to the appellant authority. Okay, एंड आपने पहले से कोई अपील फाइल नहीं कर रखी है, यू वांट टू फाइल अपील नाउ, सो इन दैट केस यू नीड टू सेलेक्ट द न्यू एप्लीकेशन. यू नीड टू क्लिक on the new application, and when you are going to click on the new application, this particular screen will be there, that is GST APL 01. This particular screen will be here related to the GST APL 01, and in that case we need to file the appeal. So if the appeal is related to multiple financial years, suppose you want to file the appeal related to financial year 18, 19, 19, 20, हो सकता है डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ने 3 साल की एक साथ में ऑडिट ली हो और उन 3 साल के एक साथ में ऑर्डर इश्यू किए हो, इन दैट केस यू नीड टू फाइल द अपील for multiple financial year. But if department is going to take the audit for a particular specific financial year, in that case we need to select that particular financial year only. Okay, so जैसे ही आप यहाँ पर yes or no select करोगे, suppose you are going to file for the multiple period yes or no, in that case your order type will be here based on your scrutiny of returns, based on your departmental audit. You need to select the audit type, and when you are going to select the audit type, after that you need to put your order number here and you need to search. अगर वो ऑर्डर नंबर यहाँ पर सर्च हो जाता है जो डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ने दिया है, ओके, इन दैट केस दिस इज ओके, यू कैन फाइल द अपील online. Okay, but in certain situation there is a specific problem is there. In that case the order number will not be validated through the online common portal due to certain technical issues. Okay, in that case उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू फाइल द अपील मैनुअली. उस समय आपको फाइल मैनुअली अपील करनी पड़ेगी, और before filing the appeal manually you just need to raise a grievance with the GSTN common portal. grievance readdressal जो पोर्टल है वहां पर एक grievance जरूर रेज कर देना, because in many time डिपार्टमेंट बाद में बोलेगा कि आपने ऑनलाइन क्यों नहीं फाइल की, आपने grievance क्यों नहीं रेज किया. So that is what is the point, this is what is the suggestion from my side. When your portal is not getting the particular order number, in that case you just need to raise one grievance on the grievance readdressal portal, and after that you can file the appeal manually. and उसका एक जो प्रिंट आउट है आपकी grievance का, you need to attach with the manual appeal. Okay, so जैसे ही आप इस सर्च बटन पे क्लिक करोगे,
योर कंप्लीट फॉर्मेट विल बी ऑटोमेटिकली ओपन, और क्या फॉर्मेट होगा उसके ऊपर हम लोग अब डिस्कस करेंगे। और वो फॉर्मेट अगर आप ऑनलाइन फाइल कर रहे हो, ऑटोमेटिकली देयर यू नीड टू पुट द डेटा, यू नीड टू पुट द ग्राउंड्स ऑफ अपील इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट एंड योर अपील विल बी रेडी। ओके, but if you are going to file appeal manually, in that case this prescribed format is here, we are going to discuss on that. तो ऑनलाइन कैसे अपील फाइल करना है, इज दैट ओके फॉर एवरीवन? जस्ट कमेंट मी इन द चैट बॉक्स। Now, this is the format of appeal. In which format you need to file the appeal? So this is the specific format in which you need to file the appeal. We'll discuss on that. Okay, and we'll share this specific format with you as well. So स्पेसिफिक लाइंस आर देयर, एंड ये हर सिचुएशन में कॉमन रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंजेस आपको करने की जरूरत नहीं है। अपील टू द कमिश्नर अपील, यहाँ पर आपका CGST है, SGST है, जो भी है, यू नीड टू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, इफ यू आर गोइंग टू फाइल अपील अंडर सर्विस टैक्स और वेट, इन दैट केस दिस स्पेसिफिक फॉर्मेट इज ऑल्सो एप्लीकेबल, यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट द सर्विस टैक्स। ओके, देयर इज नथिंग, एनी चेंजेस आर देयर। So in which act you are going to file the appeal, you just need to select the act. Before the honorable commissioner appeal, you need to select the location. Suppose you are going to file the appeal in Jodhpur, in that case you need to select the Jodhpur. If you are going to file the appeal in Maharashtra, you need to select the location as a Maharashtra. You need to put the appeal number, and this is the financial year. This will be provided by the appellant authority when you are going to manually submit that appeal, or when you are going to submit that appeal through online, this will be automatically generated. Your appeal number will be automatically generated. There is no requirement to fill that particular tab. Okay, दिस इज अपीलेंट, दैट मीन्स जो बंदा यहाँ पर अपील फाइल करने जा रहा है उसको उसके पर्टिकुलर सबमिट करने। सपोज आई एम गोइंग टू फाइल अपील, इन दैट केस मैसर सचिन जैन, एड्रेस जोधपुर तहसील जोधपुर राजस्थान। ओके, वी नीड टू पुट द एड्रेस हियर। दिस इज ऑल्सो यूनिवर्सल टैब, यहाँ पर भी कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। रेस्पोंडेंट मीन्स किसके ऑर्डर के अगेंस्ट में यू आर गोइंग टू फाइल द अपील, सो यू नीड टू पुट दैट अथॉरिटी एज वेल। इफ यू आर गोइंग टू फाइल द अपील अगेंस्ट the order of assistant commissioner or deputy commissioner, in that case you need to select that assistant commissioner or deputy commissioner, central goods and services tax division, whatever will be the situation, we need to select the respondent. Okay, now we have the index. So serial number 1 में first we have memorandum of appeal. मेमोरेंडम ऑफ अपील के अंदर आपका ग्राउंड्स ऑफ अपील आ जाएंगे, आपके स्पेसिफिक पैराज आ जाएंगे। देन आफ्टर कॉपी ऑफ ऑर्डर इन ओरिजिनल, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में यू आर गोइंग टू फाइल द अपील, इन दैट केस यू नीड टू अटैच द कॉपी ऑफ दैट ओरिजिनल ऑर्डर, बिकॉज जो अपीलेंट अथॉरिटी है वो उस ओरिजिनल ऑर्डर को भी तो पढ़ेगा, बेस्ड ऑन दैट दैट अथॉरिटी इज गोइंग टू कंसीडर योर फैक्ट, सो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्डर इन ओरिजिनल। Now there is requirement of pre-deposit, because जब भी मैं अपील फाइल करता हूं, in that case I need to file 7.5% of the tax amount. So जो प्री डिपॉजिट वाला है उसका मुझे चालान यहाँ पर सबमिट करना है, और उस चालान का अमाउंट मुझे यहाँ पर पुट करना है। एंड इफ द अपील इज फाइल्ड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडवोकेट, इन दैट केस देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप लोग पावर ऑफ अटॉर्नी अटैच करते हो उसके साथ में कोर्ट फी स्टाम्प जरूर लगाना है। ओके, कई बार क्या होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी लगा देते हैं, कोर्ट फी स्टाम्प नहीं लगाते हैं, डिपार्टमेंटल अथॉरिटी बाद में हमको 4 बात सुनाता है। सो वी नीड टू बी रेडी फॉर दैट। व्हेन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द पावर ऑफ अटॉर्नी, वी जस्ट नीड टू अटैच द कोर्ट फी स्टाम्प। If you require the format of power of attorney, in that case you just need to comment, will provide that power of attorney format as well. Okay, एंड ये सारी की सारी चीजें सीक्वेंस में लगेगी, इस सीक्वेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। फर्स्ट यू नीड टू फाइल द मेमोरेंडम ऑफ अपील, दैट कॉपी ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर, कॉपी ऑफ चालान एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आर इन वन सीक्वेंस। ओके, वन बाय वन यू नीड टू प्रोवाइड, एंड यू नीड टू अटैच द पेज नंबर एज वेल हियर। दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ योर अपील। कोर्ट फी स्टाम्प इज ऑफ 5 रुपीज। 5 रुपीज कोर्ट फी स्टाम्प इज सफिशियंट। ऑर्डर जो आपके पास में आएगा, दे आर यूजिंग द वर्ड 100 रुपीज स्टाम्प, 200 रुपीज स्टाम्प, तो वो बहुत पुराने हो गए हैं। उन्होंने क्या है कि किसी भी स्टेट में उसको चेंज नहीं किया है, दे आर जस्ट गोइंग टू यूज द सेम लैंग्वेज। सो वी नीड टू बी
ready for that, we just need to attach the 5 rupee court fee stamp, okay, on the पावर ऑफ अटॉर्नी, और जो आपका मेमोरेंडम ऑफ अपील है उसके ऊपर भी आपको 2-2 रुपए के जो कोर्ट फी स्टाम्प है, 2 कोर्ट फी स्टाम्प्स ऑफ 2 रुपी ईच यू नीड टू पुट, ओके। नाउ अपील टू द कमिश्नर, यहाँ पर वापस स्पेसिफिक फॉर्मेट है, अपील टू द कमिश्नर। यहाँ पर आपको लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, अपील नंबर ऑलरेडी प्रोवाइडेड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द अपीलेंट सेम वी आर गोइंग टू कॉपी, डेजिग्नेशन एंड द एड्रेस ऑफ द ऑफिस पासिंग द डिसीजन, जिसने ऑर्डर पास किया है उसका नाम, उसका एड्रेस, और जो मेरा ओरिजिनल ऑर्डर नंबर है और जो मेरी डेट है, आई नीड टू पुट दैट ओरिजिनल ऑर्डर नंबर एंड द डेट ऑफ द ऑर्डर। जो लास्ट मेरा ऑर्डर आया था वो कौन सी डेट को आया था, आई नीड टू पुट द डेट ऑफ दैट ओरिजिनल ऑर्डर एज वेल, ओके। सो when you will receive that original order from the adjudicating authority, all these details are already available with that particular order, okay। आपको कहीं और सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सारी की सारी चीजें आपको वहां पर ऑलरेडी मिल जाएगी। यहां पर आपको अटैच करना है एड्रेस, जिसके ऊपर आप जो है उसका नोटिस भेज सकते हो, बिकॉज व्हेन यू विल फाइल द अपील, वेदर इट इज मैनुअल और वेदर इट इज ऑनलाइन, डिपार्टमेंट इज गोइंग टू सेंड यू वन नोटिस for the personal hearing, and department is also send you the order of the appellate authority in original, okay, to your postal address and on your registered mail id as well. So in that case you need to provide that address on which you want that order or notice. So first you need to provide the address of the appellant, that is जो अपील यहाँ पर फाइल कर रहा है, and second, suppose I am a chartered accountant and if I am filing the appeal, in that case my address should be here, so that one copy I will also get, so that I can also file the appeal, or I can also know the personal hearing dates and all the things. So always we need to put 2 addresses. Whatever will be the period of dispute we need to put, okay, suppose it is for 1 year, it is for 2 year, we need to put that address, okay। अपील के कौन सा कितना अमाउंट मेरा मैटर में है, for service tax and GST, suppose 5 lakh rupees is under dispute, 2 lakh rupees is under dispute, so we need to show that amount, okay। if there is any interest is also there, in that case we need to put the same, because जब department को liability raise करेगा, in that case department is also ask for the interest, so if there is interest, in that case we need to put the interest, and if there is any penalty, in that case we need to put the penalty figure as well, okay। These all figures are just for example purposes, okay। Penalty will be 100% of tax, okay। So this is here। now यू नीड टू पुट द टैक्सेबल वैल्यू, जिस अमाउंट पे टैक्स चार्ज कर रही है डिपार्टमेंटल अथॉरिटी, मुझे वो वाला फिगर भी यहां पर पुट करना है। सपोज डिपार्टमेंटल अथॉरिटी 5 लाख रुपए पे कोई टैक्स चार्ज कर रही है, इन दैट केस द टैक्सेबल वैल्यू इज 5 लाख रुपीज एंड सपोज द टैक्स अमाउंट इज 50,000 रुपीज, इन दैट केस योर टैक्स अमाउंट इज टू बी पुट हियर एंड द टैक्सेबल वैल्यू इज टू बी शोन हियर, ओके। Now your statutory deposit जो आपने डिपॉजिट करवाया है प्री डिपॉजिट, यू नीड टू शो द अमाउंट हियर एंड डेट यू नीड टू पुट, ओके। और जो अमाउंट हमको डिपॉजिट करवाना है that will be 7.5% of tax amount only, there is no requirement to deposit the interest and the penalty, okay। अगर आप पर्सनल हियरिंग सुनना चाहते हो, इन दैट केस यू नीड टू सेलेक्ट यस, एंड इन ऑलवेज सिचुएशन यू नीड टू सेलेक्ट यस, बिकॉज पर्सनल हियरिंग इज रिक्वायर्ड, because later on if you want to add certain fact in your case, in that case at the time of personal hearing you can add easily, okay। आपको कहां पर आप रिलीफ की डिमांड कर रहे हो, तो you are going to demand the relief for your original order by the departmental authority, that is what is the original order, so you need to put that original order and you need to use the language that इस order को आप set aside करें और हमारी request को consider करें, that is what is the point, okay। so अभी तक हम लोगों ने जो भी चीजें डिस्कस की, दे all are completely related to a specific format, there is nothing any changes, okay। you just need to change the figures, there is no requirement to change any other thing। जैसा कि हम लोगों ने at the initial stage of the session ही डिस्कस कर लिया था कि there is just a change in your grounds of appeal, बाकी सारी की सारी चीजें मेरी सेम रहने वाली है। अब जो मैं ब्रीफ फैक्ट ऑफ द केस डिस्कस करने वाला हूं, वो फैक्ट्स मुझे यहाँ पर उठाने हैं, जो ब्रीफ फैक्ट्स हैं वो मुझे यहाँ पर उठाने हैं, कहां से, नोटिस में से, दैट इज ओरिजिनल ऑर्डर में से। आई नीड टू यूज द ब्रीफ फैक्ट, सो दैट
when the appellant authority is going to review that appeal, in that case, through that brief facts, that authority can easily get the idea that what is the case and what is the situation. ये क्या केस है, क्या सिचुएशन है, किससे रिलेटेड है, सारी की सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाए. ओके, नाउ जो फॉर्म है उसका डिस्टिंक्ट पैन नंबर और ऑल द सिचुएशंस इज टू बी शोन हियर. और यहाँ पर उसको जो शोकोज नोटिस इशू होगा सबसे पहले, सपोज सिचुएशन इज रिलेटेड टू ASMT 10. ओके, इन दैट केस वी नीड टू टेक द रेफरेंस ऑफ द ASMT 10, उसके नोटिस रेफरेंस नंबर एंड द डेट वी नीड टू पुट हियर. ओके, in that particular notice, suppose there is a liability of tax with the interest and the penalty. Okay, and if the matter is related to the GST returns, so whatever will be the situation, whatever the ground on which department has issued the GST ASMT 10, or the decision is pronounced under the business audit or the departmental audit, all the grounds we need to put here. And an important बात बताऊं, जो डिपार्टमेंटल अथॉरिटी अपना ऑर्डर इश्यू करेगी, उनके ऑर्डर का भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है. And in that particular format, they are also going to use one heading, that is brief facts of the case. वो सारा का सारा कंटेंट ब्रीफ फैक्ट वाला, जस्ट यू नीड टू कट कॉपी एंड पेस्ट हियर. ओके, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू डू more efforts. You just need to copy paste the brief facts of the case from the notice issued by the departmental authority under your tab of your appeal. Okay, so this is completely based on your particular para. Now अब आपको बताना है कि उस बंदे ने क्या गलती की है. दैट मींस जिस अथॉरिटी ने, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने यहां पर ऑर्डर पास किया है, उसने गलती क्या की है. तो आपको यहां पर बताना पड़ेगा सबसे पहले कि ये जो असिस्टेंट कमिश्नर है, इसने इसका ऑर्डर पास किया है. दैट इज द असिस्टेंट कमिश्नर हैज ऑलरेडी पास द ऑर्डर डेटेड दिस एंड दिस, और उस ऑर्डर के अंदर उसने क्या क्या पास किया है. ओके, दिस थिंग इज ऑल्सो यू नीड टू कॉपी पेस्ट फ्रॉम द नोटिस. ओके, उसका जो ओरिजिनल ऑर्डर है ना, उसके अंदर सबसे लास्ट पेज पे वो हमेशा लिखता है, आई हियर बाय पास दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, एंड फ्रॉम दैट ऑर्डर यू नीड टू कॉपी पेस्ट these lines. Okay, this is also specific and you just need to copy paste. So brief facts is also you need to copy paste from the order, and your order जो confirmation order है, that also you need to copy paste from the original order. Okay, we'll also share with you the copy of one original order so that you will get the idea that this para is completely copy paste from that particular fact. And in your each and every situation, whether the appeal is related to GST, whether the appeal is related to service tax, whether the appeal is related to VAT, although whether the appeal is related to your income tax, these two facts you need to copy paste from the order issued by the departmental authority. Now you are going to request, okay, to the appellant authority के जो मेरे असिस्टेंट कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया था उसको आप सेट असाइड कर दो, और उसको सेट असाइड करने के लिए मैं यहां पर आपको ग्राउंड सबमिट कर रहा हूं. Okay, and for this grounds of appeal there is no any format is available. This is completely based on your provisions of law. Okay, if the matter is related to place of supply, you just need to put the provisions of law related to the place of supply. If the matter is related to value of supply, time of supply, input tax credit, penalty related issue, that is section number 73 and 74, in all these situations you just need to put the grounds of appeal related to the basic provisions of law. And in that situation आपको क्या क्या इंक्लूड करना है वो जरूर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. In your grounds of appeal, that is Goa. Okay, in that case you need to include first the provision. Okay, चाहे वो मेरे फेवर में है चाहे वो मेरे अगेंस्ट में है, फर्स्ट आई नीड टू पुट द प्रोविजन वेदर it is favorable or against. Okay, related to the particular section or particular matter. If the provision is related to, if the original order is related to my value of supply, in that case I need to put the provision related to value of supply, that is section number 15, and relevant rules, that is rule number 27, 28, 29, 30, 31. Okay, after that you need to provide the analysis of that particular provision. कि provision में लिखा हुआ है, first you need to copy paste that particular section, and after that you need to provide the analysis of that particular section. Okay,
आफ्टर दैट आपने जैसे ही एनालिसिस प्रोवाइड करवा दिया, उसके बाद में उस एनालिसिस के बेस पे आपको ये प्रूफ करना है कि यू आर राइट, this liability is not on you. Okay, so on the basis of that particular analysis you need to prove your situation. Okay, and जैसे ही आपने अपनी सिचुएशन प्रेजेंट कर ली, ऑन द बेसिस ऑफ योर सिचुएशन यू नीड टू पुट सर्टेन डिसीजन प्रोनाउंस्ड बाय डबल एआर अथॉरिटी, ट्रिपल एआर अथॉरिटी, हाई कोर्ट. ओके, so that is what is the situation, that is what is the steps you need to follow while drafting the grounds of appeal. Provision, analysis of the provision, base कि ये सिचुएशन मेरे फेवरेबल में है, एंड देन आफ्टर यू नीड टू पुट द डबल एआर अथॉरिटी, ट्रिपल एआर अथॉरिटी, हाई कोर्ट के डिसीजन एंड सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, सो दैट योर अपील विल बी वेरी मच इफेक्टिव. ओके, सो जैसे यहाँ पर पहले सेक्शन को प्रेजेंट किया गया है, सेक्शन नंबर 73 ऑफ फाइनेंस एक्ट. ओके, रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ लॉ. देन आफ्टर देयर आर सर्टेन डिसीजंस प्रोनाउंस्ड बाय द हाई कोर्ट एंड द डबल एआर अथॉरिटी. देन देयर आर सर्टेन सपोर्टिंग्स रिलेटेड टू डेफिनेशंस. हो सकता है कि ग्राउंड्स मेरा किसी एक पॉइंट से रिलेटेड नहीं हो, ग्राउंड इज रिलेटेड टू मल्टीपल थिंग, इन दैट केस वी नीड टू पुट द मल्टीपल थिंग्स एज वेल. Taxability related, again I need to put certain decisions. Okay, I need to put the definition from the provisions of law so that my grounds of appeal will be more effective. And with each and every section I need to provide the analysis, and with that analysis I need to provide my favor, and after that I need to attach the relevant decisions. Okay, and for each and every decision I need to provide the analysis of that particular decision. I need to provide the crux of that decision in 5 to 7 lines. Okay, I am not going to put the complete decision. Or after the submission of your section, after the submission of analysis of provision, after the your beneficial point, and after that your decision related to double AR, triple AR authority, and the points related to your matter, you just need to submit. Above submission it is clear that the appellant is not liable for the payment of service tax on royalty under reverse charge basis, because the notice was related to the royalty on service tax under रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. सो मैंने ऊपर सारे के सारे ग्राउंड्स डाले, एंड बेस्ड ऑन दैट ग्राउंड मैंने ये आर्ग्यू किया कि यहाँ पर रॉयल्टी नहीं लगना चाहिए. दैट इज व्हाट इज द सिचुएशन. ओके, नाउ द पॉइंट इज दैट सर समझने की कोशिश करना, जो मैंने बोला था प्रोविजन, प्रोविजन का एनालिसिस, बेनिफिशियल एंड डबल एआर, ट्रिपल एआर, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं किया गया. नाउ द पॉइंट इज दैट when department is going to raise the demand on account of tax, department is also asking for the interest and penalty. Am I right? जब भी डिपार्टमेंट टैक्स के लिए कोई क्वेश्चन रेज करेगा, एट दैट टाइम डिपार्टमेंट इज ऑलवेज आस्किंग फॉर द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, एंड फॉर द ग्राउंड्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, व्हेन यू वांट टू रिमूव दैट इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, these are the specific situation you may copy paste it, copy cut and paste. Okay, so these are the specifics, that is decisions are there, and in that particular decisions Honorable High Court, Honorable Double AR, Triple AR Authority, Honorable Supreme Court has already pronounced that when there is no implication of the tax, and in that case you cannot ask for the interest and penalty, so you may use these particular decisions for your interest and penalty related matters. For tax related matter you need to prepare the grounds, but for interest and penalty these are the universal decision. Or certain decisions under GST is also available, I will also share the same, but these are the universal decisions are there. You may use these decisions for your reference. Okay, so that is what is the situation, how we are going to prepare the grounds of appeal. So the grounds of appeal is clear for each and everyone. I just want confirmation from each and everyone. Just comment me in the chat box on fastest basis.
I am asking from each and everyone. I am expecting reply from each and everyone. Sir, this session, this webinar is for each and everyone. So I am expecting reply from each and everyone that you are getting the points. Are you thinking that this webinar is useful for you? Now, at the end, we have prayer, and this prayer is universal. In each and every situation, we just need to copy paste that prayer. Okay. In the view of the ground of appeal as above, it is humbly prayed that the Honorable Commissioner Appeal Jodhpur may kind enough to set aside the original order number, and this is dated and this is signed by the authorized signatory, and at the end we need to put the verification. That is what is the situation of the appeal. These are the grounds of appeal. So first, जब हम लोगों ने discuss किया, front page is related to the details related to appellant and details related to the officer authority जिसके against में we are going to file the appeal. Then we have brief facts of the case, and brief fact of case we are going to copy paste from the original order. Then after we have confirmation of the order, and the same we are going to copy paste from the original order, and then after we need to put the grounds of appeal, and the ground of appeal is completely based on the provision of law, analysis of the provision of law, the beneficial point of the provision of law, and then after the decision pronounced by AAR, AAR and the authorities. And after that, we, as we all know, that when department is going to raise, when the department is going to raise the question, when the department is going to raise the question on account of tax, at that time department is also going to ask for the interest and penalty. So for that interest and penalty, we have certain universal decisions are there, and we are going to consider those universal decisions. After that, we have prayer and the verification. That is what is the complete format of your appeal. Okay, when you are planning to file the appeal, these are the things we need to submit with that appeal. Okay, so suppose if there is any difference in 2A, 3B, if there is matter related to supply, if there is matter related to your valuation, and you want to attach certain thing with that appeal, in that case, after that verification part, you may attach the supporting documents. Okay, so you may attach the supporting documents, and when you are going to file the appeal online, in that case, they are going to option to provide the supportings online. और जब आप लोग मैनुअली फाइल कर रहा हो, you need to prepare this in Word file, take the print out in 3 copies. 2 copies is for department and 1 copy is for you. So 3 copies you need to submit. 1 copy की वो receivable बना करके आपको वापस दे देगा. That is what is the manual filing of appeal. And in case of your GSTN portal, your receipt will already be automatically been generated from the GSTN common portal. So that is what is the technique how we are going to file the appeal, manually or through the online. Now, sir, most important point is that जब मैं अपील प्रिपेयर कर रहा था, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग द अपील और व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग द ग्राउंड्स ऑफ अपील, एट दैट टाइम कुछ ग्राउंड्स है जो मैं ऐड करना भूल गया. हो सकता है ना उस ग्राउंड के अंदर कोई पॉइंट है जो मेरा रह गया. इज देयर एनी ऑप्शन टू फाइल द ग्राउंड्स ऑफ अपील लेटर ऑन? सो यस, you can file the additional grounds of appeal at the time of your personal hearing. Because जैसे ही आप अपील फाइल कर दोगे, डिपार्टमेंटल अथॉरिटी इज गोइंग टू प्रोवाइड यू वन opportunity of personal hearing, and for that purposes you will receive the proper notice on your postal address, registered address, and on your registered mail ID. Okay, you need to, when you are going for that personal hearing, in that case you need to carry certain additional documents if you want to submit, or if you have certain additional points if on which you want to argue, in that case you may submit certain additional documents as well with your appeal, with your personal hearing. So जैसे ही आप पर्सनल हियरिंग के लिए जाओगे, वहां पर आपकी ऑलरेडी फाइल उनके पास में होगी. इफ यू वांट टू अटैच सर्टेन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, यू जस्ट नीड टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दैट एंड सबमिट द सेम. ओके, नाउ ये तो हो गया एडिशनल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पॉइंट. जब मैं पर्सनल हियरिंग के लिए जाता हूं, जो मैंने ग्राउंड्स ऑफ अपील सबमिट किए हैं, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट. And when you are going for the personal hearing, that is what is also a very important point, because your first impression is your grounds of appeal, and your second impression is your personal hearing when you are personally present in front of the departmental authority. So जैसे ही आप किसी डिपार्टमेंटल अथॉरिटी के पास में पीएच के लिए जाते हो, फर्स्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपके ग्राउंड्स ऑफ अपील है ना, वो सारे के सारे आपके दिमाग में उससे रिलेटेड प्रोविजन ऑफ लॉ एकदम क्लियर होने चाहिए.
जो भी ग्राउंड्स ऑफ अपील आपने पुट किए हैं इन योर अपील, the each and every ground is clear in your mind with the provision of law, with complete analysis, with the decision of AAR authority, AAR authority, and High Court. Second point, if you are going to submit any additional documents, in that case also there is requirement that your concept is to be very much clear related to your additional documents. Okay, now third point, जैसे ही आप डिपार्टमेंटल अथॉरिटी के सामने जाओगे, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विद यू द पर्सनल एक्सपीरियंस. ओके, इन ईच एंड एवरी केसेस this is to be happen. Okay, I have handled around 200 plus appeals, so this is my personal experience. जैसे ही आप डिपार्टमेंटल अथॉरिटी के सामने जाओगे, अपीलेंट ट्रिब्यूनल अपीलेंट अथॉरिटी के सामने जाओगे, कमिश्नर के सामने जाओगे, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट कमिश्नर इज दैट व्हाट यू वांट टू से इन दैट स्पेसिफिक केस. सो फर्स्ट यू नीड टू एलाबोरेट द सिचुएशन. सीधा जाकर के हमने ये नहीं डिसीजन नहीं देना है कि सर इस केस में ऐसा होना चाहिए. नो, we are first going to elaborate the situation, we are first going to elaborate the nature of the business कि सर ये particular situation है, ये taxpayer है, इस business के अंदर deal करता है, that is what is the taxability, that is what is the financial statement, and that is what is the decision pronounced by the departmental authority. Now that is our point which we had already included in our grounds of appeal, and related to that the practical point is this, and the same decision is pronounced by the AAR authority, AAR authority, High Court or Supreme Court. And if there is no any AAR authority, AAR authority decision is available, in that case no problem, you can argue with the provision of law. जैसे ही आप ये सब कुछ उसको प्रेजेंट करोगे तो वो उसका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा एनालिसिस ऑफ द प्रोविजन ऑफ लॉ. सपोज द मैटर इज रिलेटेड टू सप्लाई, वो आपको कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन देगा और वो आपसे पूछेगा इस केस में सप्लाई क्या होनी चाहिए. तो you need to be very much prepared, you need to be very much ready with the complete content related to that specific point. जिस भी specific point से related आप argue कर रहे हो, उस point का आपको पूरा का पूरा ज्ञान, पूरा का पूरा knowledge होना चाहिए at the time of PH. आपने grounds of appeal बहुत अच्छे से बना लिए, but if you will not be able to present yourself in case of personal hearing, in that case departmental authority will not issue the order in favor of you, because they are not going to check each and every of your grounds. They are considered the fact you are going to present in front of that departmental authority. That is what is also a very important thing. At the end you need to submit all the your grounds, all the related to matters. उसके बाद में if possible कुछ personal talks भी हमको उस departmental authority से करनी है. Okay, because they are very light, वो लोग बहुत light way में आपसे बात करेंगे, and we also need to be very much light. हम कहीं पर भी aggressive नहीं होंगे because they are at the rank of commissioner. So हमको humbly बात करनी है, हमको हमारे facts present करने, हमको हमारे grounds present करने, हमको जो case के points है वो present करने हैं, and that is what is the thing. And if there is any additional document, we may provide the additional documents. Now the question is that can we adjourn, क्या adjournment यहाँ पर मिल सकता है क्या in case of hearing? So there are 3 adjournments are there. अगर आपकी PH के लिए एक नोटिस आया, in that case you can adjourn it for 3 times. Okay, तीसरे टाइम के बाद में वो एक्स पार्ट या डिसीजन दे देगा, उसके बाद में आपको यहाँ पर एडजॉर्नमेंट का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है. जो मैक्सिमम 3 एडजॉर्नमेंट्स आर पॉसिबल और प्रोवाइडेड इन केस ऑफ अपील, not more than that. Okay, so that is what is the point related to the appeal. क्या हम लोग एडिशनल कुछ सबमिट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हमने डिस्कस कर लिया. ग्राउंड्स ऑफ अपील से रिलेटेड हम लोगों ने मैटर डिस्कस कर लिया. एडिशनल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कशन कर दिया. नाउ if you have any question, if you have any doubt related to the appeal, you are free to raise the same in the chat box. I have also attached one scrutiny written related notice, and in that case there is issue related to the excess ITC claimed in the GSTAT 3B return, and in that case if we want to file the appeal, in that case we need to consider the fact and we need to reflect the complete differences and the reason of that. Okay, so this is just for the example purposes.
So is there any doubt is pending in your mind related to appeal? Because we had started our session from the basic perspective, that how we can file the appeal, when we need to file the appeal, what are the things we need to consider while drafting the appeal, what are the specific point we need to consider while drafting the grounds of the appeal, how we can file appeal manually, how we can file appeal online through GSTN common portal, what are the other things we need to consider at the time of our personal hearing, and what are the additional documents we need to submit at the time of our personal hearing. These are the point we had covered in this particular webinar. Okay, so if you have any doubt, if you have any question, in that case just put your question and doubt in the chat box. I am here to provide you the solution. And post session, if you found any issue, if you found any doubt, if you found any question in your mind related to the appeal while practically filing the appeal or while drafting the appeal, you may connect with me over WhatsApp. Okay, I have already shared my WhatsApp number, so you just need to connect with me over this WhatsApp number, and whatever will be your feedback for this particular webinar, you may provide the feedback of that webinar in this on this particular WhatsApp number. So if there is any question is pending, then just comment me in the chat box. If there is no question is pending, in that case, we may conclude the session. We may sign off for the session. Yes, Nilesh ji, we need to maintain the page size, we need to maintain the font, line spacing, all these things we need to be in a proper way. Okay, so just check this. For this purposes, we need to prepare one table. Okay, will जो मैं आपको वर्ड फॉर्मेट ड्राफ्ट शेयर करूंगा उसके अंदर ये टेबल फॉर्म में होगा. सो जो अभी आपको दिक्कत आ रही है स्पेसिंग की, वो सारे के सारे इश्यूज यहाँ पर नहीं होंगे. बट योर अपील शुड बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन अ प्रॉपर पेज साइज इन अ प्रॉपर फॉन्ट एंड ऑल द थिंग्स इज टू बी कवर्ड. सारे के सारे फॉन्ट सिमिलर होने चाहिए, कुछ भी चेंजेस यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्लियरली सारी सारी चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. इफ यू वांट टू हाईलाइट सर्टेन थिंग्स, इन दैट केस आल्सो यू नीड टू हाईलाइट दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दोज इंपॉर्टेंट डिसीजंस, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है. जो हेडिंग है हमारी, हर हेडिंग को हम लोगों ने यहाँ पर हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है. डिसीजन को हमको हाईलाइट करना है सो दैट डिपार्टमेंटल अथॉरिटी कैन इजीली grasp that particular point. If you are going to provide any provision of law, in that case you may put the same in the box so that that particular thing can be separately identified. Okay, so all these things are there. We need to be very much careful from that point. जो हमारे डिसीजन है वो भी सारे के सारे हाईलाइट वे में है. जो हम लोग हेडिंग लगाएंगे दैट इज आल्सो हाईलाइट सो दैट डिपार्टमेंटल अथॉरिटी कैन इजीली गेट द थिंग्स. ओके, so that is what is the point. If you have any other question, just comment me in the chat box. This presentation will be shared on your registered mail ID. Post this session, our team will share you one feedback form. जैसे ही आप उस लिंक पे अपना feedback दोगे, that file will automatically shared on your registered mail ID. Okay. So if anyone has any question, any doubt, then may connect with me over WhatsApp. Will available for you. There is no issue with that related to any matter related to appeal and any litigation related issues. ऑनलाइन कैसे अपील फाइल करनी है उसका प्रोसेस भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया. सो यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल व्हाइल फाइलिंग द ऑनलाइन अपील, एंड यू मे ट्राई द सेम ऑनलाइन थ्रू योर जीएसटीएन कॉमन पोर्टल. और अगर आपको वहां पर कोई भी इशू आता है, यू मे कनेक्ट विथ मी ओवर व्हाट्सएप. ओके, सो can we sign off for our today's session, today's webinar? Thank you everyone for the patience learning. टॉपिक छोटा सा था, चीजें कई सारी थी उसके अंदर. प्रोविजन ऑफ लॉ हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए, बट कौन कौन से प्रोविजन लॉ पे हमें ध्यान देना है, ऑल दोस थिंग्स वी हैड ऑलरेडी कवर्ड. ओके, सो व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द अपील, व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू कवर, व्हाट आर द ग्राउंड्स, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द अपील, व्हाट आर द स्पेसिफिक पॉइंट वी नीड टू बी कंसीडर्ड व्हाइल पर्सनल हियरिंग एंड व्हाइल ड्राफ्टिंग द अपील. All these things we had already covered. So thank you everyone for the patience learning. We'll meet you soon in any other webinar. So thank you everyone, and whatever will be your feedback, please provide on the link which will be received by you on your WhatsApp number on your registered mail ID. So thank you everyone. Bye bye. Good night. Take care.